students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we will begin with the lesson number 7 of your class 4 science, that is safety first. You know what is safety? The safety is the place where we can stay away from the harm. The chances of getting harm are zero. So we should take our safety measures first. In this chapter, we will learn about how can we save at our home, how can we save at our school, how can we save at our how can we save at the roads, how can we save at many places. So let's begin with this chapter. First, we will learn about safety at home, safety while safety while walking on busy roads. How can we save while we are on the roads? Third, safety at school. How can we save at our school? Fourth is safety at the playground. How can we save at our playgrounds where we go for play? Fifth is safety while swimming. How can we save while swimming? And the last one is first aid. You know what is first aid? The first treatment given to an injured person before and without the arrival of the doctor is called first aid. So let's begin with this. Where you are or whatever, wherever you are or whatever you do, आप कहाँ भी हो या कुछ भी करते हो, always remember the golden rule, safety first. आपको एक golden rule को हमेशा याद रखना, that is safety first. It is better to be safe than sorry. क्या you know what does this means? मतलब कि safe रहना better है. अगर आप जो safe कुछ accident के बाद sorry बोल देते हो, उससे better है कि आप safe रहो. Safety rules को follow करो. Accidents causes pain and suffering to the victim and their loved ones. Accidents खाली आपको ही pain cause नहीं करते या suffering आपको ही cause नहीं करते, आपके loved ones भी suffer करते हैं बहुत बार. They result in injuries such as bruises, burns, bleeding and fractures. वो क्या करता है? Injuries में result करता है. उससे क्या होता है? Bruises, burns, bleedings और fractures हो जाते हैं और कभी-कभी loss of life भी हो जाता है. A person involved in a serious accident may lose a body part or even die. As I told you, जो person effect होता है, victim होता है accident का, वो क्या होता है? अपने body part को भी कभी-कभी lose करना पड़ता है उसको और sometimes it dies. We can easily avoid accidents by following the safety rules. हम accidents को avoid कर सकते हैं by following some safety rules like safety at the road, safety at school, safety at home, safety on any other place, safety in the playground. So there is a different set of rules for different places like home, school, playground and roads etc. यहाँ पे बहुत सारे different set होता है rules के, जो हमें roads पे follow करने चाहिए, उनके different होते हैं, school के अलग होते हैं, playgrounds के अलग होते हैं, swimming pools के अलग होते हैं. So safety at home. First we will read about what measures should we take while we are at home. Be careful while lighting a stove. जब आप कोई stove light कर रहे हो तो you should be careful. Flames suddenly come out of the stove and cause accidents. कभी-कभी flame suddenly आ जाता है, अचानक से आ जाता है और accident cause करता है. Second, always keep well away from the stove when food is being cooked. आपको हमेशा स्टोव से दूर रहना चाहिए जब फूड कुक हो रहा होता है. Steam escape from a boiling pan will cause severe burns. जो steam आ जाती है आपके boiling pan से, उससे आपको severe burns हो सकते हैं. Third, handle electric appliances with care. आपको electrical appliances को care से handle करना चाहिए. An electric shock may paralyze your limbs. Electric shock क्या कर सकता है? आपके limbs को paralyze कर सकता है. It may even cause death. वो death भी cause कर सकता है. Like you switch on the electric appliances with wet hands, that you will get the shock definitely. Fourth point, slipping on wet floor and tripping over things lying on the floor cause many injuries. जो आप slip हो जाते हैं floor पे या trip कर जाते हो things पे जिस पे आप जो आपके floors पे लाइट रहती हैं, तो उससे क्या होता है? You suffer from many injuries. So keep your home clean and dry. तो आपको अपने home को clean और dry रखना चाहिए. Store all your things like books and toys in their proper places. You should store all the things and books on their proper places. You should not throw anything here and there. You can get slipped. So next point, do not switch on or off electric appliances with wet hands. As I told you before, you should not switch on or off your electric switches with your wet hands. Next, never run up or down the stairs. आपको run up नहीं करना चाहिए, run down नहीं करना चाहिए stairs पे.
If you trip, you may fall a long way down. अगर आप trip कर गए तो आप बहुत ज़्यादा नीचे तक गिर सकते हो. Next, do not leave things on the floor. Someone might trip and fall. आपको चीज़ों को अपने फ्लोर पे नहीं छोड़ना चाहिए, या तो कोई ट्रिप कर सकता है या कोई गिर सकता है. Next, do not take medicines on your own. That is an important point. You should never take your medicines on your own. You should first take the advice of the doctor or an adult before touching or taking any medicines. You should check the manufacturing and expiry date first of all. You may poison yourself by eating medicine. आप अपने आप को poison भी कर सकते हो medicines खाने के. Medicine that are not meant for you, जो आपके लिए बनी ही नहीं है, कई बार आप गलती से without knowledge आप खा सकते हो. So you should not touch or take any medicine without the help of elders. Next, do not eat stale, spoiled and exposed food. आपको stale, spoiled और exposed food नहीं खाना चाहिए. It can cause food poisoning. इससे आपको हो सकता है food poisoning. All poisonous chemicals should be kept away from eatables and reach of the children. आपको जो poisonous chemicals होते हैं वो आपको अपने से दूर रखने चाहिए. उनको किसी चिल्ड्रन के रीच से दूर रखना चाहिए, ईडेबल से दूर रखना चाहिए, उनमें गिर ही सकता है वो. Now let's talk about safety while walking on busy road. How can we safe while walking on a busy road? जब हम busy road पे walk कर रहे होते हैं, क्या क्या हमें safety measures को follow करना चाहिए? First is like you should cross the road from the zebra crossing. While if there is no zebra crossing, you should look at the right, then left, then again to your right. If there is no traffic light, wait for the policeman. Most accidents on the roads are results of careless driving. जो accidents roads पे होता है वो सब किसके result होता है? Careless driving के result होते हैं and carelessness of pedestrian की वजह से होता है. जो pedestrians road पे ऐसे ही चलते रहता है. You should follow these safety rules on the road. First point, always walk on the footpath. आपको हमेशा footpath पे walk करना चाहिए. You should not walk on the road. Second, where there is no footpath, walk on the left side of the road. अगर जहाँ पे कोई footpath ही नहीं है तो you have to walk on the right side of the road. Third, before crossing the road, look to your right, then left, then right. Again and then cross the road if it is clear. जब आप road cross कर रहे हो, you should look at the right, then left, then again to your right. अगर सब चीज़ clear है तो then you can cross the road. Next, always cross the road at zebra crossing. You should always cross the road from this zebra crossing that are the black and white strips on the road. Next point, avoid walking between the vehicles when they stop at a traffic light. जब व्हीकल स्टॉप हो जाते हैं ट्रैफिक लाइट को, आपको उनके बीच में से अवॉइड करना चाहिए मूविंग. नेक्स्ट, नेवर प्ले ऑन द रोड. यू शुड नेवर प्ले ऑन द रोड. अगर आप रोड पे खेल रहे हो, अचानक से कोई व्हीकल आ गया, यू कैन गेट through an accident. Now, safety at school. How can we safe at our school? We should not run on the stairs. We should not run in the moving bus. We should not get in the moving bus or get out from the moving bus. We should not stand in our moving bus. So, first point. So, before that, in school, accidents can happen when children run, push each other. School में accidents कब हो सकते हैं? जब बच्चे भागते हैं या push करते हैं एक दूसरे को. To avoid such accidents, first point, do not slide down a railing of the staircase. You should not slide down on the railing of the staircase. जब railing होती है तो आपको नहीं slide down करना चाहिए. It can be dangerous for you. Second, do not push each other or fight while in the playground. You should not push each other while you are in the playground. Always play a safe game. आपको हमेशा safe game खेलना चाहिए. And the true game, wait for your turn while using the swings. आपको अपनी turn का wait करना चाहिए जब आप swings को use कर रहे हो. Next, stand in a queue for getting in and moving out of the bus. जब आप move in कर रहे हो या move out कर रहे हो बस में, तो you should stand in a queue like this. Next, do not jump on or benches or desk. आपको नहीं jump करना चाहिए benches पे या desks पे. Next, do not push up and down the staircase. आपको push up नहीं करना चाहिए, push down नहीं करना चाहिए staircase पे. Do not push each other. आपको एक दूसरे को भी push नहीं करना चाहिए. You may fall and get hurt. आप गिर सकते हो, आपको चोट लग सकती है.
Now, safety at playground. What should be measures we should take at our for our safety at the playground to avoid accidents in the playground? First, do not push others while playing. You should not push others like this while playing. You should wait for your turn. Second, learn the rules of the game and play by them. आपको games के rules learn करने चाहिए and you should play by them. Third, wait for your turn at rights and swings. आपको rights पे और swings पे अपनी turn का wait करना चाहिए. You should not be in a hurry. Next point, we will talk about safety while swimming. While we are swimming, what safety measures we should take near the swimming pool? You should not go in a deeper place. You should swim in the supervision of an adult. You should not push anyone in the swimming pool. So, swimming is a wonderful exercise. Swimming क्या एक wonderful exercise है. One must follow safety rules, repeat to prevent accidents. हर किसी को सेफ्टी रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करने चाहिए एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए. फर्स्ट पॉइंट, नेवर गो फॉर अ स्विमिंग अलोन. आपको अकेले स्विमिंग के लिए नहीं जाना चाहिए. सेकेंड पॉइंट, डू नॉट गो अप टू द डीप एंड अंटिल यू हैव एंड लर्न टू स्विम परफेक्टली. आपको डीप एंड्स में नहीं जाना चाहिए जब तक आपने स्विमिंग अच्छे से परफेक्टली लर्न नहीं की. थर्ड, नेवर पुश एनीबॉडी इनटू द पूल जस्ट फॉर फन. यू शुड नॉट पुश एनीवन into the pool. अपने फन के लिए नहीं करना चाहिए. That person can get hurt. Next point, swim only when there is a lifeguard on duty. आपको जब ही swim करना चाहिए जब कोई lifeguard है ड्यूटी पे या कोई adult है वहाँ पे. Now let's talk about first aid. First aid क्या होती है? It is the first medical help given to an injured person before the arrival of the doctor. First aid is the medical help given to the injured person or a sick person before proper medical aid arrives. जब तक कोई proper medical aid नहीं आती उससे पहले आपको क्या देते हो आप? You give them first aid. Immediate first aid can save a person's life. जो एक immediate first aid होती है वो क्या करती है? person की life को save करती है और prevent permanent injury. वो permanent injury भी prevent करती है. You must learn to give first aid. आपको first aid देना सीखना चाहिए. How can we deal with the injured person like burns, fractures, heavy blood flow, cuts? So we should learn how to give the first aid. While giving first aid, be calm and make the injured person or sick person comfortable. जब आप फर्स्ट एड दे रहे तो आपको काम रहना चाहिए और इंजर्ड पर्सन को भी काम करना चाहिए, उसे कंफर्टेबल करना चाहिए. मेक हिम हर लाई डाउन. उसको नीचे लिटा देना चाहिए. डू नॉट पैनिक आफ्टर एन एक्सीडेंट. आपको पैनिक नहीं करना एक्सीडेंट के बाद. कॉमन इमरजेंसीज दैट नीड फर्स्ट एड आर माइनर कट्स, पेंटिंग, इंसेक्ट्स, वाइट स्नेक बाइट्स एंड बर्न्स. जो कॉमन इमरजेंसीज होती है हमारी क्या होती है फर्स्ट एड के दौरान? दैट आर माइनर कट्स, पेंटिंग, इंसेक्ट बाइट्स, स्नेक बाइट्स एंड burns. Now let's talk about for minor cuts हमें क्या क्या फर्स्ट एड देनी चाहिए. Wash the cut in clean water. कट को clean water में easily wash कर दीजिए. If you have some antiseptic, put it on. अगर आपके पास कोई antiseptic cream है, you can put it on the victim. If not, keep the cut clean by covering it with a clean cloth or band-aid. तो कट को क्या करना है? क्लीन करना है, फिर उसको कवर करना है with clean cloth or band-aid. If the cut is very deep, press the cloth or tightly and try to stop the bleeding until medical help comes. और कट बहुत ज़्यादा डीप है तो क्लोथ को अच्छे से प्रेस करना है और टाइटली टाई करना है जब तक कोई मेडिकल हेल्प नहीं आती. When someone gets faint, what can you do? Make the fainted person lie down immediately. जो faint हो गया उसे एकदम से नीचे लिटा दीजिए. Make sure his head is lower than the other body part. Make sure करिए जो उसका head है उसका बाहर body part से नीचे की side होना चाहिए. It will help the blood to reach the brain fast. वो क्या करेगा? brain को brain तक blood portion में easily help करेगा fastly. Would help the person regain his consciousness. उससे क्या होगा? blood पर्सन की कॉन्शियसनेस वापस आ जाएगी. स्प्रिंकल वाटर. यू हैव टू स्प्रिंकल वाटर ऑन द हिज हेड एंड फेस. उसके हेड पे और फेस पे वाटर को स्प्रिंकल करना है. अलाउ फ्रेश एयर टू रीच हिम. वहाँ पे हमें क्राउड नहीं बनाना है, उसको घेर के खड़ा नहीं होना है. वी शुड अलाउ द फ्रेश एयर टू रीच हिम. लूजर हिज क्लोथ्स एंड कॉल फॉर अ डॉक्टर.
उसके क्लोथ्स को लूजन करो और देन यू हैव टू कॉल द डॉक्टर. Now, for insects bite, how medical first aid we can give to him or her? Insects bites or stings are painful. जो insects bites होती है और stings होती है बहुत ज़्यादा painful होती है. It bites and bite an insect like bee or a wasp. Apply a paste of baking soda and cold cream. अगर आप bee से या wasp से that is तैयार. अगर आप उससे कोई वो आपको काट लेता है तो what should you apply? You should apply baking soda and cold cream on the affected part to give relief. Affected part पे cold cream लगाइए, baking soda लगाइए relief देने के लिए. Put some ice on the affected part. कुछ ice भी रख दीजिए affected part पे. Now grow with knowledge point. A bruise is a discoloration of skin caused by pressure. Have you seen the purple or blue things on your body? That is bruise. First aid for bruise is very simple. जो bruise के लिए first aid होती है बहुत simple होती है. Apply a cold pack over the bruise as soon as you can. उस bruise पे cold pack को apply करो जब तक आप जितनी जल्दी आप लगा सकते हो. This slows down the bleeding under the skin. उससे क्या होगा जो bleeding skin के अंदर हो रही होती है वो slow down हो जाती है. It may cost 2 or more 3 days to heal. उससे सिर्फ 2 या 3 दिन लगता है heal होने में. Now next page. For burns, अगर burns हो जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? To treat minor burns, keep the burnt area under cold running water. अब अगर minor burns है तो what area को cold running water के अंदर रखना है. Put an ice pack लगाइए on the burnt area for a few minutes. You can put the ice pack on the burnt area for a few minutes. Apply an antiseptic cream like Bernol on the burnt area. You can apply antiseptic creams or like Bernol. Bernol की तरह लगा सकते हो एक burnt area पे. Now, learning point of this chapter. First point. Accidents cause pain and suffering to the victim. Accident क्या cause करता है? Pain और suffering cause करता है victim को and their loved ones भी suffer करता है उससे. Second, we can easily avoid accidents by following safety rules. हम accidents को avoid कर सकते हैं अगर हम safety rules को follow करेंगे तो. Third, slipping on wet floors and tripping over things. Lying on the floor cause many injuries. जो हम slip कर जाते हैं wet floors पे या slip कर जाते हैं things पे जो लाइड होती है floor पे हम injuries cause कर सकते हैं. Fourth point, all poisonous chemicals should be kept away from eatable and reach out of children's. जो poisonous chemicals होते हैं वो children से और eatable से बहुत ज़्यादा दूर रखने चाहिए. Last second point, most accidents on the roads are result of careless driving and careless of pedestrians. क्यों होते accidents? Careless driving की वजह से, careless pedestrians की वजह से. And the last one is immediate first aid can save a person's life or prevent permanent injury. जो immediate first aid दे देता है उससे person की life बच सकती है और permanent injury होने से बच सकती है. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.